So yeah, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Today is our day 20 of solving DSA question. So yeah, without just wasting any time, let's start our day with the quote for the day. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. So basically, मैं वो नहीं कि जो मैं अंदर हूँ, बल्कि मेरा काम जो है उससे मेरी पहचान है. So yeah, this is uh, this is the meaning of this quote. So you guys know him. Who is he? He is a very famous actor. Uh, you can guess the name of him. Basically, he is Christian Bale. You might know him. I've been a great fan of him and has been watching his movie and also right now watching his movies. So yeah, if you have not watched his movie, just go and watch. It would be a great experience for you guys. So yeah, ये सर के बारे में क्या बोलूँ ये you can say he is the greatest of all time in in terms of acting. So yeah, without wasting any time, let's start our day with the question for the day. So yeah, this is our question for the day. That's lead code number 14, longest common prefix. This is basically an easy level question. We're gonna first read out the question, write down the approach, thereafter we will solve. Guys, always keep a pen and paper ready before solving any DSA question. It would be great beneficial for you. So yeah, let's see. Write a function to find the longest common prefix string amongst an array of strings. Okay, if there is no common prefix, return an empty string. So यहाँ पे हमें क्या है, array of strings दिया गया है जिसमें हमें हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स फाइंड आउट करना है. तो हमारा प्रीफिक्स क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट टू राइट से स्टार्ट होता है. बेसिकली हमारा अब हम देख लेंगे यहाँ पे से हमारा एफ एल फ्लावर, एफ एल ओ फ्लो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं. यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे बोला गया है कि अगर हमारा इफ देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स देन वी हैव टू रिटर्न द एम्प्टी स्ट्रिंग. अगर कोई भी कॉमन कैरेक्टर्स हमारा नहीं निकला स्ट्रिंग में से, तो बेसिकली वी हैव टू रिटर्न द एम्प्टी स्ट्रिंग. एंड सो या दैट वाज द क्वेश्चन. वी गोना जस्ट write down the approach. We will be using two approaches. At first using horizontal, that will be brute force, you can say, and thereafter we will be using vertical scanning. That will be optimized in terms of interview question solving for interview के वक्त सॉल्व करने में हेल्पफुल है. और so yeah, let's solve the question. So here you're gonna first make the string prefix in which we will store our string array of strings first character or value. It will be strs. Next we're gonna just run a loop that will run from 0 to 0 से रन नहीं करेगा क्योंकि हमारा 0 पहले से इनिशियलाइज कर दिए. So it will run from 1 up to strs dot length. So it will be, so strs is not a string, so we will not put the circular bracket. Thereafter we will plus plus. Thereafter we will run a while loop for checking the strs the strings at ith index and its character at ith. Now here we will not be comparing the character. Here we will be using our starts with function to check if it's equal, to compare the other strings in the arrays with the first string, that is our prefix. We will be taking our prefix and thereafter we will, so here will be equal to, so we're gonna take not equal to, it will run up to not equal to. thereafter it will, जब हम हमारा केस हमें मिल जाएगा, कॉमन जो केसेस से मिल जाएगा, तो उसके बाद तो हमें रन करने की जरूरत नहीं है ना. तो ये हमारा वर्क कंडीशन तब तक रन करेगा तब तक कि हमारा मिल नहीं जाता तब तक.
So yeah, thereafter we just gonna assign the prefix substring to prefix में substring कहाँ से रन करेगा आपका 0 से आपका वैल्यू रहेगा आपका strs strs नहीं prefix और length का prefix dot length here prefix is string so here will be circular bracket and will be -1 so this gonna we gonna assign this to prefix and finally we're gonna return the prefix as output. So we're gonna just check run this code and see what's the output is giving. So yeah, all our test cases are passed. So this is basically a brute force approach in this, or you can say horizontal approach. Here our time complexity will be over the number of strings present in the array, and here no space extra spaces are used. So here our space will be constant. So yeah, this was our first approach. Next we want to solve our it in a more optimized in which intervals like the question. So can I just edit in this? यहाँ पे हमें एक एज केस पे दे देंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड यानी क्योंकि हमें 90% क्वेश्चन तो ये सॉल्व कर देगा बाकी जो 10% क्वेश्चन रहेगा उसके लिए हमें एज कैसे रखेंगे तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे अगर हमारा स्ट्रिंग का वैल्यू नल है या फिर हमारा स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 0 के इक्वल है देन वी गोना जस्ट गिव एन आउटपुट एज एम्प्टी स्ट्रिंग so we're gonna just run this code and see what's the output is giving. So yeah, all our test cases are passed. So basically this was our first approach. Next we're gonna solve using vertical scanning. So here our we will first initializing the string as a reference. That will be our strings first array, array of first character or string you can say. And thereafter we're gonna just run a for loop that will run from I of 0 to up to reference length and it will be updated by 1. And here inside it we're gonna take a character, initialize a character that will be strs of I. Okay, sorry it will be रेफरेंस क्योंकि हम लोग रेफरेंस के थ्रू काम कर रहे हैं रेफरेंस के थ्रू हमें कंपेयर करना है तो हमें रेफरेंस डॉट कैरेट दे देंगे हमारा at ith index. So thereafter we're going to just run another loop for comparing it and j that will run from 1 it will run up to strs.length. So here our strs is a array of substrings so here it will be like that no circular bracket is required. So here we'll increment j by 1 and inside it we're going to just check if our ith value is equal to the length of this guy strings strs.length of jth का लेंथ हमारा कॉलम के लेंथ के इक्वल होना चाहिए to maximum to avoid the index out of bounds error. So it will be index.j it will be length and thereafter we're gonna put another condition that will be strs j dot char at I is equal to c the current character. So this will be our rows value. We're gonna just first traverse using the column one by one column एक
पहले कॉलम में पास करेंगे, उसके बाद सेकंड कॉलम चलेंगे। तो सेकंड कॉलम के लिए हमारा हम यहाँ पे वन से लेकर स्ट्रिंग तो लेंथ तक चलेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे चेक कर लेंगे अप टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एरे, सॉरी एरे। एंड या फिर हमारा कैरेक्टर्स अगर मैच कर जाता है तो वहाँ पे हम लोग कैरेक्टर्स अगर मैच नहीं करते हैं तो हम यहाँ पे बिगिन कर देंगे अपना क्या रेफरेंस का स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, सॉरी सब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमें दिया हुआ है, हमें सब स्ट्रिंग निकालना है। तो हमारा सब स्ट्रिंग कहाँ तक हो जाएगा, अप टू आई तक। सो फाइनली यू हैव टू रिटर्न द रेफरेंस एज आउटपुट। सो यहाँ पे भी एक एजेस कैसे से ले लेंगे हम। सो हियर इट विल बी strs equal to null or its length is equal to 0, then we're gonna just return an empty string. So yeah, just run this code and see what's the output is giving. There's an error, reference.length, reference.length, string, sorry यहाँ पे हमारा reference जो है string है, so it will be circular bracket लगाना पड़ेगा। So here one more error is coming, और reference string strs.length, okay, it's equal to कैरेक्टर आई। सो यहाँ पे हमारा सर्कुलर ब्रैकेट हो जाएगा। सो या just run this code and see what's the output is giving. Again error dot length strs dot length, यहाँ पे हमारा एरे का रेंज है ना, strs हो गया हमारा एरे हो गया जो है जे। तो here we have not don't require, नो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग्स है ना, तो जे हमारा स्टोर कर रहा है, स्ट्रिंग में स्टोर कर रहा है। सो यस, just run this code and see what the output is giving. So yeah, all our test cases have passed. So basically ये हमारा वर्टिकल स्कैनिंग है प्रोसेस है। यहाँ पे भी हमारा जो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हमारा नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हो जाएगा, एंड यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा कांस्टेंट। we're gonna just finally submit this code and see what the output is giving. So yeah, all our private test cases are passed. So yeah, this was our day 20 for DSA question. Next we're gonna solve our day 20 on DSA question tomorrow. So तब तक के लिए DSA क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, मेरे साथ बने रहे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक कल मिलते हैं पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय बाय।